हेलो 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 हेलो, बीच में इलेक्ट्रिशियन आया था, उसने लाइट काट दी थी, इसलिए स्क्रीन ज़रा बंद हो गई थी। बट एनीवेज, ओके सो ये सवाल तो हो गया ना। एक्सेप्टेड। ओके, मैं इसका दूसरा सोल्यूशन देख रहा था। A different approach can be implemented. Take two dummy nodes for each list. Point each to the head of the list. Iterate over them. If anyone becomes null, point them to the head of the opposite list, and then continue iterating until they collide. Okay. So, हाँ, when I continue your iteration, बेसिकली मैं चाहता क्या था। अब इस कोड में दिक्कत क्या है? ओ ऑफ एम प्लस एन तुम इधर लगा रहे हो, फिर तुम वापस आइटरेट कर रहे हो। अब डबल डबल काम हो रहा है, राइट? एक बार तुम लेंथ निकाल रहे हो, फिर तुम वापस एम प्लस एम ही कर रहे हो pretty much। ओके, जैसा से कि जैसा से क्या बोल रहा है? बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। और अगर इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ? अब नहीं चलेगा ना ये, अगर इंटरसेक्शन हो ही नहीं। इसमें जो क्वेश्चन था गारंटीड था इंटरसेक्शन, रिटर्न नल नहीं। अच्छा, तो दोनों कभी ना कभी नल हो जाएगा। बट ओके, तो मैं इधर हूँ, मैं इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये। अब जो पहले जल्दी पहुंचा था वो तो अब सेकंड वाले पोजीशन पे आ जाएगा, राइट? एंड दूसरा वाला जब स्टार्ट होगा तब कितना टाइम लगेगा? तब उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम डिफरेंस होगा, राइट? अगर सेम लेंथ होती तो दोनों आ जाते, दोनों साथ में वापस रिटर्न करते, राइट? दोनों रिटर्न करते साथ ही साथ स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर डिफरेंस लेंथ है तो ये वाला जो है, जो जल्दी खत्म हुआ, ये एक पॉइंट जल्दी पहुंचेगा, राइट? और वो एक पॉइंट जल्दी, क्योंकि एक पॉइंट का डिफरेंस है। और फिर जब ये अगला आएगा, ये एक आगे बढ़ चुका होगा क्योंकि एक ही पॉइंट का डिफरेंस था। ओके, देन आई कैन से d1 is equal to head, d2 is equal to head d, right? then I say while d1 is not equal to d2, uh, d1 is equal to head head b if not d1, else d1 dot next, right? And d2 is equal to head a if not, ओके तो मैं नन पे जाऊं या नन पे ना जाऊं? आई मीन डजेंट मैटर, राइट?
व्हाट मैटर्स कि मैं दोनों में सेम चीज़ करूँ, सो आई कैन से इट्स नॉट d1 डॉट नेक्स्ट एल्स d1 डॉट नेक्स्ट इट्स नॉट। अच्छा, लेकिन अगर मैं नन पे नहीं जा, अगर मेरा d1 कभी नन नहीं हुआ तो मेरा कभी वो रिटर्न आएगा ही नहीं, राइट? सो मेरे को नन पे जाना है, एल्स d2 डॉट नेक्स्ट। h2 कैसे आ गया भाई? d2 d1 क्या है? अगर d1 नन है तो हेड भी है और नन नेक्स्ट है। d2 क्या है? अगर तो हेड है और नन नेक्स्ट है, एंड देन आई कैन रिटर्न d1। ओके, बेटर, काफ़ी बेटर टाइम। आई मीन नॉट दैट, मेरे को लगा ये 200 में कर रहा था, दैट वुड आई मीन। 90 से 76, ओके। गुड क्वेश्चन था। तो आई थिंक अब 3 हो गए। आई होप सो। लेट मी सी, मेरे को याद नहीं रहती। एक और सैड बात पता है क्या है? अगर मैं अपने कंटेस्ट देखूं, फक, कल कंटेस्ट है वापस। फक, मैंने मिस कर दिया क्या? अच्छा नहीं, हाँ ये कर लिया वाला 15 घंटे, सॉरी। ओके। तो आई नो कि इनमें मेरी काफ़ी बुरी रैंकिंग है, मेनली बिकॉज कि मैंने गलत सबमिट कर दिया था। बट तब भी +15 और +4, कम ऑन, कम ऑन, +44। मेरे को लगा +15 इसमें होगा, इसमें +20 25 होगा। आई मीन लगा, एटलीस्ट माइनस नहीं हुआ। अब तुम कंटेंट्स दो और तुम्हारा माइनस हो जाएगा, कितना बुरा लगा। ऐड 2 नंबर्स इन लिखो। मेरे को देखा था 3 हो गए, नहीं, आई थिंक 4 हो गए। आई थिंक सब 4 कर चुका हूँ, बट व्हाटएवर, आई डोंट केयर, क्योंकि मैंने 2 दिन एक एक क्वेश्चन स्किप करा था। टेक्निकली मेरे को आज 375 पे होना चाहिए मैं, एंड आई माइट डू इट, यू नो, टू गेट बैक ऑन ट्रैक। द डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। 2 नॉन एम्प्टी निकले, 2 नॉन, अच्छा नॉन नेगेटिव नंबर्स है, रिवर्स में स्टोर्ड है। मतलब 243, ये मतलब रिवर्स में स्टोर्ड है, राइट? तो 342 +564, यही करना है ना? ये मैं कर चुका हूँ। हाँ, बड़े काफ़ी गंदा सोल्यूशन लग रहा है। अच्छा, आगे इसमें पूरा नंबर निकाल रहा हूँ फिर। ये 2 थोड़ी है, दिस कैन नॉट बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2। आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। फिर रिवर्स में तो मेरा तो बेटर ही है ना कि रिवर्स में, ये एक्चुअल में सम तो राइट हैंड साइड से होते हैं, वरना मेरे को रिवर्स करना पड़ता। सो क्या कर रहा हूँ मैं? +1 है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नहीं, इसको क्या बोलते हैं? कैरी ओवर, या कैरी ओवर बोलते हैं जब एडिशन में हो।
वो डिवीजन में होता था कैरी। एडिशन व्हाट इज कॉल्ड when we carry over the first digit in two digit number, two digit carried over ही कहता है आई गेस। हाँ, तो अभी के लिए कैरी 0। सो मेरे को क्या नई लिंक लिस्ट बना दूँ या पुरानी में दे दूँ? आई गेस आई गेस आई गेस आई एम गोना डू सेम डू दिस इन L1। अच्छा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि लेंथ सेम हो, राइट? तो मेरे को अगर मैं एक लिंक लिस्ट में करना चाहता हूँ, आई हैव टू डू दैट इन। मेरे को किस में करना होगा वो बताओ? मेरे को वो बड़ी वाली लिंक लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। अब मैं कैसे रिकग्नाइज करूँ विच इज़ द गॉडडैम बिगर लिंक? राइट, इफ आई डोंट वांट टू यूज एक्स्ट्रा स्पेस। और ये भी हो सकता है अगर कैरी तो मेरे को एक और नोड बनाना पड़ेगा। ओके, सो शुड आई, मन नहीं कर रहा मेरा ये क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा, बट कंपेयर करने का मन नहीं कर रहा कि कौन सी लंबी है। बट आई गेस यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू। तो कर लेते हैं। लेन वन इज इक्वल टू लेन टू इज इक्वल टू, मैं क्यों कर रहा हूँ कांस्टेंट स्पेस के लिए, है ना? तो 100 नोड तुम्हारे कितना ही स्पेस ले लेंगे, हार्ड स्पेस ले लेंगे। बट जब तुम्हारे पास 1 बिलियन नोट्स होंगे वो तो बहुत स्पेस ले सकता है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? शुड आई मेक अ न्यू लिंक लिस्ट या नहीं? लेट्स सी, इसने अगर इसने अपने सबसे ऑप्टिमाइज वाले में करा है तो मैं करूंगा, वरना नहीं। ओके, सो उसने करा है। तो यही देखना था आई गेस। राइट।
then I can say while temp is equal to L1, while temp len1 plus L1, temp is equal to वापस से temp कर दो while temp L2 plus L1 and then temp is equal to temp. अब if len2 is greater than len1 then उल्टा कर दो L1, L2 is equal to L2, forget L1 में हमेशा मेरा greater है. I know that L1 has a greater power. Then I say carry is equal to 0. Okay, carry is हमेशा for sure मेरा 0. मेरा carry तो सिर्फ 1 ही हो सकता है, 0 या 1. Anyways, carry 0. Then I say okay, okay. So add them, right? So P1 is equal to L1, P2 is equal to L2. While I know मेरा L1 बड़ा है, while T2, while T2. Okay. Then I tell you add करो. P1 dot value is plus is equal to carry plus T2 dot value, right? If T1 dot value greater than, if T1 dot value is greater than 9, then क्या कर दो T1 dot value, so mod it by 10 to get the first digit, right? Not mod it but divide it by 10. Not divide it by 10 but actually mod it. Mod it करो. Mod it by 10. टेन होगा तो 0 हो जाएगा, 1 होगा तो 11 होगा, 1 रहेगा, right? And then carry is equal to 1. Else carry is equal to 0. Carry 0. Right? And then T1 is equal to T1 dot next. T2 is equal to T2 dot next. Then I say while T1. And यही सेम करना है मेरे को, एक्सेप्ट T2 नहीं होगा, सिर्फ कैरी होगा. T1 dot value plus is equal to carry. If T1 dot value greater than 9, then यही, हाँ, वरना कैरी 0. Then you say okay, अब तुम लास्ट पे आ गए, राइट? अब तुम्हारा T1 खत्म. If T1 dot value greater than 9,
तो अब नया नोड बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो T1 डॉट वैल्यू कम कर दो and then make a new node. What is that new node going to be? What is that new node going to be, please? So create a new node. New node is equal to this node. It's a list node, है ना? Yep, list node. The value is going to be 1 क्योंकि 1 ही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा कैरी। Then I say okay, okay. मेरा जो T1 है डॉट नेक्स्ट कर दो न्यू नोड पे। And I think that's all, and now I can return my L1. ओके, तो अगर T1 नन हो गया, अच्छा तो फक, तो उसने आखिरी वाले की करा, फिर तो उसने आगे भी मैं इसमें तो आगे बढ़ा ही नहीं रहा। T1 इज इक्वल टू T1 डॉट नेक्स्ट, है ना? So I need to keep track of the previous, है ना? हाँ, so how the hell I'm gonna go to the last one? तो एक प्रीवियस बना लेते हैं। प्रीवियस स्टार्टिंग में क्या है, नन है। जब भी मेरा T1 आगे जा रहा है, नॉट ओवर है, बट आगे से इसको काटो, हटाओ, एंड यहाँ डाल दो प्रीवियस इज इक्वल टू नन। तो जब भी मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ उससे पहले मेरे को स्टोर कर लेना प्रीवियस इक्वल टू T1। और यहाँ पे मैं T1 नेक्स्ट कर रहा हूँ, स्टोर कर लो प्रीवियस इक्वल टू T1। अब मेरे को प्रीवियस में चेक करना है, प्रीवियस डॉट वैल्यू, तो प्रीवियस में चेंजेस करो एंड प्रीवियस डॉट नेक्स्ट कर दो न्यू नोड। ओके, मेरा 1 मैं न्यू नोड बना तो रहा हूँ। What the fuck? Why am I putting it as new node? तो आगे मेरा 1 वैल्यू 1 नेक्स्ट। तो दिक्कत क्या है? What is the problemo? The problemo, I don't know. Not next है ना? ये यहाँ पे जा भी रहा है, print 1 नहीं जा रहा। अच्छा, क्योंकि जब मैं वो क्या है, नो अंडरस्टैंड। अच्छा, तो मेरे को प्रीवियस से चेक ही नहीं करना, मेरे को प्रीवियस से चेक ही नहीं करना, कैरी से चेक करना है, प्रीवियस चाहिए नहीं मुझे। बताओ इसे। हाँ सॉरी। हाँ, आई डोंट केयर अबाउट दिस मैन। ये कब होगा? इफ
कैरी इज इक्वल टू 1। तो तुम ये बना दो। तब अब आएगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट नोड अटेंड करने से मेरे को प्रीवियस चाहिए। फैक्ट I guess I need the previous. If carry greater than 0, I don't need this क्योंकि ऊपर हो रहा है, and I think this should be okay. Okay, one minute. Let's see. Any edge cases? जब मेरा 0 हुआ, 0, जस्ट 1 ट्राई करता हूँ एंड देन 0 ट्राई करता हूँ एंड देन इससे भी एक बड़ा नंबर ट्राई करता हूँ कि उल्टा सही से कर रहा है या नहीं। समझ नहीं। Let's see. Okay, what about I do 0 over here? Okay, looks good honestly. Sound like a potato. And इसमें स्पेस भी नहीं यूज हो रही, तो हो वही। एलिमेंट्री मैथ या उन्होंने अपने छोटे में कैसे करा। अच्छा, मतलब ये लोग आंसर बना रहे हैं लेकिन वी डोंट, ऐसी सही बात है। एक्चुअली मैं भूल गया था ऑनेस्टली, मैं ये भूल गया था। आई हैड टोटली forgotten about it. I had so forgotten about this thing. The length of the new list is at most कि हम आंसर को स्पेस कंसिडर नहीं करते। आई गेस ये इन प्लेस के लिए अगर मैं बोलूँ करूँ तो इसलिए अभी थोड़ा गधा है क्या? मतलब बोल रहा है मैं कैरी यूज नहीं कर रहा हूँ। मतलब यही बोला है ना, नो एडिशनल वेरिएबल फॉर कैरी। लेकिन तू सम में चेक कर रहा है, फिर अगर 9 से ग्रेटर है तो तू वो कर रहा है ना? तो दैट्स द सेम थिंग बेटा। इफ सम प्रूव मी रॉन्ग दैट आई एम अ डम्ब फक। नो यू डिड नॉट। चलो ये भी अगर हो गया तो कुछ, ऐसा आई थिंक मैं 5 कर चुका हूँ right? क्योंकि मेरे 2 कम थे। आई वॉज आई वॉज लो, टू लो, 2 लो था मैं। ओह फक, 2 लो तो मैं उसके साथ था। और मैंने जो एक पूरा दिन मिस करा वो, आई मीन जो जिस दिन मैंने पूरा मिस करा तभी मैंने उस दिन डेली करा राइट।
इसलिए मेरे 2 लेस से 1 लेस हो गया। अच्छा ये तो मैं कर चुका था, ये काउंट नहीं होता, ये काउंट नहीं। 3 आउट ऑफ 5। ना। ओके। So I'm gonna do is डेली कर लेते हैं अभी तो। मैंने ट्राई करा था, मैं सुनना आई हैव टू चेक इट। तो करने का मतलब है एडिट हो गया सही। ये बस एफ एंड एस लॉक ऑन द लेफ्ट फिर एंड एज। अच्छा चलो ठीक है। और जीज द लेटेस्ट, ठीक है। हाउ इज द स्टेट ट्रांजिशन कह रहे हो? We only consider situations fundamentally different related positions. If we simply use blah blah blah, the resulting algorithm code would become quite complex. You need to consider whether F is on the left, in the middle, or on the right. Okay, F in the middle, F in the middle. मतलब शॉपिंग सही है। N comma N plus 1 minus n. Since each ith athlete from the front completes the exam, flipping the entire argument does not affect the outcome. मतलब एकदम फ्लिप कर दिया। Yeah, I guess that makes sense. ठीक है। ओके। What the fuck is this? हाँ। Let me try to understand. Okay, I don't know why. अच्छा नहीं ठीक है। वो दोनों आपस में ही लड़ेंगे, ठीक है। रिटर्न डीपीओ। तो फ्लिप करने से क्या होगा? अच्छा मतलब मैं चाहता हूँ एफ हमेशा छोटा हो, तो चलो ये ठीक है। ओके। ओके। आई गॉट नो क्लू द ट्वेल्थ डिजाइन।
ऐसा कर लेफ्ट साइड है और रेंज एफ और रेंज एन हाफ, सिर्फ उस हाफ में दे, क्योंकि दूसरा हाफ में पूरा एलिमिनेट करने की टाइमर में। एंड पोजीशन क्या है आई पूरा। व्हाट इज एस प्राइम नाउ? ओके। इफ यू थिंक आई कैन डू दिस। और नहीं लो, वार दे। नहीं लेनी। करा तो है। लेट्स सी। थैंक यू। This is the shit, man. This is the shit. This is the goddamn shit, man. मैं फैंग में ही जब मैं तुमको अच्छे निकाल के लाता हूँ। वर्मा जी आपने भी नहीं करा क्या? वर्मा जी ने फीलिंग ऑफ लॉक टू एन। ओके। ठीक है। if L greater than R, return function। for DP, if L is greater than R, return round। F F के अच्छा यही है। तो ये कौन सा राउंड है? तो लेफ्ट राइट एंड नंबर से। ओके। अगर L इक्वल टू R है मतलब हम खत्म।
वरना हाफ करो। हाफ करो। ओके। इन इज मिनिमम ऑफ एल को, हाँ ठीक है, वहाँ तक तो करना ही है। इंट जे इज इक्वल टू वट एवर मैक्स ऑफ एल माइनस आई परसेंट पर वन। आई गॉट नो को honestly what the fuck is happening over here? I got no clue. Hey, bloody insane, man. हाँ, तो पहला काम है एस हमेशा लेफ्ट पे होना चाहिए। If s less than and half, what is s फर्स्ट वाला? उनके बोल रहा है अगर ये मेरा है और j in range is prime, मतलब maybe starting of the s prime minus f। f मेरा दे क्या रहा है? तो बोल रहा हूँ ब्रह।
100 दिन निकला, तो तुम्हारा 1000 दिन। ओके। हाँ, डीपी। Maybe I should read it from the back, right? Because the entire region is not. Okay. Is it, if you know that if it's definitely on the left, we can then design a straight on the separately according to is on the left, in the middle, or on the right. F has F minus athletes on the left, will compute with the corresponding athletes on the right, leaving 0 से F minus athlete. F and S have S minus F minus athletes in between, will compute with the right. If there F minus athletes remaining, and I of them, and S athletes remaining, and J of them. Next round, the two best athletes are going to positions I plus 1 and I. अच्छा, if there are F minus 1 remaining here, right, and I of them on the left hand, and J of them S के right side पे, तो उनके पोजीशंस I plus 1 होगी, and then okay I plus J plus 2. Okay, J is then I think in between them. Total number of remaining athletes, your value. Minimum of, okay, if S is in the middle as shown in the figure above, the straight lines are equal to same case and S on the left. अगर right पे है more complicated, there will be 3 cases. In this case, match each other to खत्म. In addition, if the one is in front with S and S prime, what is S prime? Is equal to n plus 1 minus S. What even is S prime? still लड़ रहा है. अच्छा, S किससे लड़ रहा है? S and S prime. तो S prime F से आगे है पीछे. एक और केस बन. In this case, it's still S. G of them. Next round, I plus 1 and I plus J plus J कैसे हो गया? I got no clue. Like,
मतलब आई बचे हैं और जे बचे हैं। इनकी नेक्स्ट पोजीशन इज आई एंड आई में जे इंजन में दूर है। ये तो ठीक है, लेकिन एस जैसे ही राइट साइड पे आ गया तो क्या तब दिक्कत होगी। तो एस जिससे लड़ रहा है एस प्राइम है, ठीक है। अब मिड क्या है? अच्छा कि एस प्राइम एफ से आगे है पीछे। अगर उसके आगे है तभी रन करेगा। आई हेट टॉप डाउन। आई वॉट नॉट। आई सॉरी। आई सॉरी, आई डोंट डू दिस। हेड है, 0 1 and 2 ही है। तो सॉर्ट करना है ना, तो सीधे मर्ज सॉर्ट ना लिख दूँ। ऑफ कोर्स, so I mean, I can do this in off one. I guess आई गेस सिंपल ही तो है। लगा दो एक बार, जितने भी जीरो है एक नया बना दो, रन कर दो। मतलब एक चीज थी है ना, बट यानी सिर्फ फकिंग है मैन, मतलब फकिंग। बस ये सवाल था। अगर मैं स्टोर कर लूँ जीरोस, कितने जीरोस है? वंस कितने वन है? टूज कितने, कितने टूज है? जीरो ही है। तो हेड, वाइल हेड, वाइल हेड। व्हाट यू नीड टू डू इज, वाइल जो तुम्हारा हेड है, इफ हेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, जीरोस प्लस इक्वल टू वन। एलिफ head dot value is equal to 1 ones plus equal else 2 plus equal to 1, right? Now the next thing is, ये तो while head था। हाँ ऐसे ओके, डमी बना लो। नोड है एंड डेटा तुम्हारा बढ़ आएगा। टेम्प है डमी और whatever in range 0, जितने भी जीरो है। टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एक नया नोड। नए नोड में क्या होगा? वैल्यू होगी 0।
and then temp is equal to temp dot for same, यही लिटरली सेम करना है मेरे को. Control C, Control V, and then Control V. Not zeros, but this zero. Once node बना दो 1 का, and then 2, and then node बना दो 2 का, right? And then just return your dummy node name. That's all. If head dot value is equal to 0, node object has not. क्या है यार? Dot data कौन लिखता है? Are you kidding me? Are you kidding me? Who the fuck writes data? What? अच्छा, my bad. Head is equal to head dot name. जीरो पे अटक जो है. थैंक यू. इससे बेटर कुछ है क्या? अच्छा, वो नोट्स नहीं बना रहा वो. ओके, तो उसने ऑफ एन एंड ऑफ वन में कर लिया. लेकिन अगर वो नन हुआ तो दोनों उसमें सबके डमी हेड बनाते हैं. तो क्या मैं बोलूँगा, तो अगर तुम्हारा जीरो है तो हेड तुम्हारा जीरो पे कर दिया, वरना हेड तुम्हारा वन पे, वरना हेड तुम्हारा टू पे, वरना हेड नन और खत्म. उसके बाद अगेन से अगर वन है तो तुम्हारा जो जीरो था लास्ट वाला वो पॉइंट करेगा.
हम्म। 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 तो फिर अगर कोई बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो से टू के नेक्स्ट से कनेक्टेड होगा, तो वन हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। ओके, तो करते हैं। वो ऑफ है ना, नो ऑफ करना। जीरो हेड नोड माइनस वन हेड इज इक्वल टू नोड माइनस वन, टू हेड इज इक्वल टू नोड माइनस वन, राइट? एंड जीरो कॉमा वन कॉमा टू इज इक्वल टू जीरो हेड कॉमा वन हेड कॉमा टू हेड। ओके।
whether temp is equal to head. While temp, what I want to do is, I say okay, while temp आगे जाके क्या होगा, if temp dot value, कितने नोट से, एटलीस्ट एक नोट से है, temp dot value is equal to dot data, zero dot next is equal to temp, and then 0 is equal to 0 dot elif temp dot data is equal to 1 is equal to 1. अगर ऐसा है तो 1 dot next is equal to temp, but okay, I need to do that still, and then temp sorry, 1 is equal to 1 dot else 2 dot next is equal to temp, 2 is equal to dot next, and then temp is equal to temp, right? Now what I have to do is 1 correct, so 1 dot next is equal to 2 head dot next, any case में कुछ है कुछ नहीं है, I don't care. If 1 head dot next exist करता है, then 0 dot next is equal to 1 head dot 1 head dot next, else it okay, एक और चीज़ करनी होगी, and then 2 को देखना, right? 2 dot next is equal to none, and then 1 dot, अगर 2 और मेरा सेम हुआ तो किसी गलत पे पॉइंट करा सकता हूँ. अब क्या होगा, else 0 dot next is equal to, right? वरना 0 dot next क्या हो जाएगा, 2 head dot next, and then we can return 0 head let's see, good question. Add one to a number represented by control, no,
So 457 plus. I cannot use x plus 3. तो सिंपल है वैसे, रिवर्स करो, वन ऐड करो, टेक्निकली मेरे को सिर्फ वन ऐड करना है, राइट? मतलब अगर वन नहीं होता, कोई रैंडमनेस नंबर होता तब मेरे को पढ़ना पड़ता. रिवर्स इट, ऐड इट, then get a new linked list, then reverse it again and then give you answer. That is O of n, O of 1, right? But now the thing is, now the thing क्या है? It's only one, right? So अगर मेरा last digit is not 9, no problem, absolutely no problem, right? But if it is 9, right, then what? Then मेरे को उसके पिछले वाला नोट भी चेंज करना है. इन एक्चुअली मेरे को उससे पिछले जितने भी 9 से वो सारे चेंज करना है, राइट? देन ऐसे ओके, तुमको भले ही ये करना है, बट मान लो सारे 9 होते, अगर मैं स्टोर करूँ, अगर मैं स्टोर दी 9, दैट इज गोना टेक सम स्पेस, और सारे 9 हो गए तो दैट्स गोना टेक ओवर एन स्पेस. So can I do something, right? So there's a sneaky way to actually know this. If I do like, if I create something like a dummy, if I say, if I just go and assume कि yep, there is gonna be a carry everywhere. अगर पहला वाला 9 है, so then I even make a new node for 1, right? And then I just keep increasing everything one by one by one. That's it. I do plus 1 irrespective of this 9 or 9. Whenever I get a 9, right, I store that this is my last effective node. And then if that 9 continues, then that is the last effective node, correct? But if that 9 does not continue, that is not my affected node, right? Then I say okay, okay, then move ahead, move ahead, move ahead. You get another 9. You say this is my last affected node, right? This is the last point I get 9. And if I only get 9 till the last, then yep. But any place I break that chain of 9, that's it. This 9 is not getting a carry, right? That's all gonna be the same. Then I say okay. Now I have the last node that is gonna be affected. If last 9, right? Everything is already plus 1. So I need to loop through till that last affected node and do minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 for everything. That makes sense? I think that makes sense. Let's see. I say that I have a last node, right? I said that's a zeroth node.
right? Last node is my 0. But then I say, okay, do one thing. If my sorry, if my first node is, I am guaranteed that I'm gonna have a head. Yep. If head dot data is equal to 9, right? I need to make a new head. New head is equal to node with my value of 1, right? With my value of 1. Last is minus 1 because nothing has been affected, right? New head is whatever, and then new head dot next is equal to what? Is equal to 1 or 0. Is equal to head, and head dot data is equal to 0. Okay, and the last affected node is the 0th node. This is okay. Temporary is equal to current node, right? अब मैं first पे जाना चाहता हूँ. I have checked the 0th node. I wanna check the first node. Head dot next. So while I have this temporary, so temporary dot data plus is equal to 1, right? If temporary dot data is not equal to 9, then you plus it. Otherwise, you put it as 0. You put it at 0, right? While I do this, right? Then I say, but is this 9? Is this even gonna be affected? You say, I don't know. I got no clue. So I say, if this is a 9, this can be my last affected position. Last equal to current. Then my last equal to current. Else my last is minus. Else is minus 1, right? And then I do current plus equal to 1. Now we are moving on to the next node. Moving on to the next position. Alright. Then I say, okay my guy. Okay my guy. Then I say, what we have to do right now is current plus equal to 1. Now I am keeping track of my last. Else do I change my current? I put it as current अगर मेरा last minus 1 है. If last is equal to minus 1, then yep, can be my last. Otherwise जो पहले था वही है. Then I say, okay, okay, current one, yeah, whatever bullshit I did, I don't care. Whatever bullshit I did.
then I'm gonna do is temporary. अब मेरा खत्म हो गया राइट, ऐसा मैं +1 कर दिया. If last is equal to 0, that can only happen जब मेरा head जब सारा 999 हो, right? That is the only time this can happen. अगर मेरे को कहीं पे भी नॉट इक्वल टू 9 आया, आई ब्रेक, एंड उसके वापस 9 आता तो इसका हायर वाली, एंड देन टेम्प इज इक्वल टू टेम्प. Then I can just return my new head. Else, just look at a number. Uh, let's something like this. Right? So 1399. This is going to be my last, right? Which is 0, 1. Last is going to be 2. That means I want to update to decrease the value of 2 these nodes. जो कि मैंने +1 करी थी. These are not going to be +1 except for the last one, right? लास्ट में क्या होगा, कैरी आएगा, +1 हो जाएगा. ओके, तो इसमें भी +1 होगा. दिस ऑल्सो गोइंग टू बी +1, दिस नोड. तो इसका +1 इज करेक्ट. इससे पहले का, तो इफ माई लास्ट इज 2, so I only have to update for the first node. That's all. If my update is 1, if let's say this was also 9, right? If this was also 9, then this would have been less. I have to update for no one. No one. If last if this is equal to 1, right? Then I have to make no update. Return this set. Fuck, what this are, right? Alright. Left last is 1. Make no changes, do this. Else. Now I need to loop for how many times? For in range. So my temporary is dead. I need to loop for range last minus 2 times, right? So this is my last 2. I need to loop only for 0 for the first one. This many times, do what do you have to do? And what if my last is -1? If my last is -1, that means every single element has to get a needs to go decrease except for the last one. So instead of putting it as -1, I can say that the last has to be what? If that is only if last is equal to -1, right? I don't want that. I don't want that. What I want is, I mean, it will really matter that. I guess we can. I can make another case for ls last equal to -1. In this case, what you have to do is just iterate everything. Temp is equal to head. Actually, let me see. So my current is this. If my last position was 9, like imagine it was like 9. It was like 4, 6, 1, 4, 6. I say
So like my current is 1, right? And then current becomes 2, then current becomes 3. When my current becomes 3, then I say data is 9. Data is 9, right? So I put as 0, last is equal to, and I see so I update to 3. Update to 3, 3, right? And that is okay. But after this, I do another current, right? So then I will go to 4. If even this was not 9, this was like whatever 3. Then what should be my actual last week? I have done plus one of everything, right? My last has to be if my last would have been 3, yeah. So if my right, then I say if my last is minus 1, there is no chain of 9, right? No chains of 9. In that case, I want कि इसी केस में हो जाए मेरा. I want कि ये माइनस हो तो 3 हो. I want कि 3 बार रन करे. तो ऐसे लास्ट मेरा करंट है 4. तो 4 माइनस, दैट मीन्स कि मेरे को यहाँ पे 9 मिला है. दैट मीन्स ये एंड ये वाला मत करो रन. 3 बार रन करो. तो 0 1 2. इफ आई वांट, जो मेरा लास्ट तो मेरा करंट होगा ना, लेट्स से इफ आई डू समथिंग लाइक आफ्टर दिस, if I say if last is equal to minus 1, return last को update कर दो current. Or do something like this, and I can remove this thing. मैं want कि इसमें काम करे. तो जब लास्ट मेरा यहाँ आता था, मैं चाहता था कि जैसे सेकंड पोजीशन है मेरे पास, जब मैं फर्स्ट पे भी नहीं चाहता कि माइनस हो, मैं ओनली वांट जीरो. जीरो तो जीरो की लास्ट माइनस 2 काम कर रहा है. अब मेरा लास्ट क्या है 4 है. मैं चाहता हूँ इस पर भी काम ना करे. अच्छा, सॉरी. जब मेरी ये लास्ट होगी, अगर मैंने लास्ट माइनस 2 कर दिया, 0 0 इज नॉट गोना वर्क. आई टू डू लास्ट माइनस 1. और जब मैं 4 में करूँगा कि 4 माइनस 1 3 तक, तो 0 1 2, 0 1 2 3 के लिए करेगा. और जब ये लास्ट होगा, जब ये लास्ट होगा, एंड आई वांट टू सी कि हमारा वो क्या है, लास्ट क्या है. जैसे ये है मेरा लास्ट 9 पे अगर था, तो मैं इस पे भी नहीं चाहता. तो 0 से 1, तो 0 होगा. ओके, कितनी बार हो काम, एंड क्या काम करना है. if temp dot data is equal to 0, अगर 0 है देन उसको कर दो 9, राइट. माय बैड. एल्स क्या कर दो, temp 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 temporary dot data minus 0 to 1, एंड देन temp को आगे बढ़ाओ.
then dot next, right? And then you can return your head again. तो मेरा लास्ट या तो जीरो होगा, वन होगा, उससे ज़्यादा होगा तो ये मैं सब रिटर्न कर रहा हूँ। अगर -1 रहता है तब भी मैं उसको एक पोजीशन दे दूँगा। लेट मी ट्राई। ओके, तो मैंने 357 दे दिया। अच्छा, मेरा टेम्परेरी तो वही से स्टार्ट हो रहा है। हेड में मैंने वैल्यू बढ़ाई नहीं, तो लास्ट जीरो कर दो। एल्स हेड डॉट डेटा प्लस इक्वल टू 1। ओके, लेट मी सी। 459। ओके, लेट्स सी। 999। ओके, let me see। 4599, and I want to see 4599099. Let's say again 4 and 9. 4, then I can say 999. And another case I can do maybe 459999. And then maybe I can put a 0 over here. Another case I can do. That's right. Bruh, I did not know this, that I am so good. That I am so goddamn good. Nice one, man. I feel good after solving the question खुद के तरीके से। बेटर कॉम्प्लेक्सिटी जो उन्होंने वो एक्सपेक्टेड बोला था। ब्रो, इससे बेटर तो मैंने करा। ओके, एक सेकंड क्यों? आई नो मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा ऑडियो, बट व्हाट दिस गाय बेसिकली सेड कि आइटरेटिव में स्पेस नहीं लगेगी। आई एग्री, मैंने बिना स्पेस के करा। टैम्परिंग डेटा मोर टाइम टेकिंग, like dot data addition done in place and in faster time counts extra space। तुम इन प्लेस कर रहे हो, हाँ, एक्स्ट्रा स्पेस में भी स्टैक की लग रही है। दैट्स ओके। तुम टैम्पर कैसे नहीं कर रहे डेटा? अच्छा, जो मैंने करा है, मैं हर एक नोड में +1 +1 +1 करते रहा हूँ, राइट? आई एम डूइंग दैट। उसके बाद माइनस भी कर रहा हूँ, तो मैं भी उसका टाइम की बात कर रहा है। रिकर्जन में क्या है? यू कैन जस्ट, अच्छा,
मैं कैरी रख लूँगा, कैरी यस या कैरी नो। फिर मैं एकदम एंड तक जाऊँगा, देखूँगा वो 9 है क्या। 9 है तो मैं उसको 0 कर दूंगा, और फिर कैरी यस कर दूंगा और नेक्स्ट में भेजूंगा। अब नेक्स्ट में मैं अगर कैरी नहीं होगा देन आई एम नॉट गोना चेंज, राइट। देन आई एम नॉट गोना चेंज। जैसे कैरी मेरा फॉल्स आ जाता है देन आई कैन जस्ट ब्रेक, राइट। एंड वैसे ही इन प्लेस है एंड इन फास्टर टाइम, क्योंकि मैं उसमें पहले चेंज कर रहा हूँ वैल्यू। ऑनेस्टली आई लाइक टाइम डेटा में क्या दिक्कत। बट आई अंडरस्टूड हिज पॉइंट, इट वॉज अ गुड पॉइंट दैट मैं ज़्यादा प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, मैं उसमें डॉट डेटा आई एम चेंजिंग द वैल्यू। एनीवेज, ओके, कैन आई डू 2 more recode questions या नहीं। तो मेरे पास 7 सवाल बचे। सॉरी, मेरे लीड कोड पे क्या स्टेटस है। आई वाज काइंड ऑफ होपिंग कि आई कैन डू 275 आज, 375 सॉरी। डेटा लेवल्स हमारे, राइट, जैसा बाइनरी ऑफ एन तो नहीं होगा। आई मीन नॉट टेक ऑफ एन। फक में, आई नीड टू अप माय नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। दिस वाज अ दिस वाज नॉट इजी सब्जेक्ट। ये काफ़ी ब्रूट फोर्स वाला तरीका है। सर आई थिंक मैं लेंथ निकालता हूँ, राइट। देन टोटल कितनी बार काम होगा, राइट। और उसमें करंट निकाले गए, अब प्रीवियस को स्टोर करते जाएंगे। और आई इन रेंज वटेवर, देखा ग्रुप बनाना है, करंट डॉट नेट।
अब प्रीवियस में कॉप करके वो चेंज करते रहेगा। ये क्या कर रहा है ना? नेक्स्ट गेम है, नेक्स्ट अगर नेक्स्ट है ही नहीं, देन डू नथिंग। अब ना फॉल बैक नो। आई डोंट नो आई एम व्हाट आई एम। आई एम नेक्स्ट आइटरेशन का स्टार्ट है, तो अब मेरे को जो करंट आइटरेशन का लास्ट है वो पॉइंट करना चाहिए नेक्स्ट आइटरेशन की लास्ट वाले को। तो आई गेस मैं यही कर रहा हूँ, और अगर उतने नहीं हुए तो मैंने फॉल बैक कर लिया। then why would I fall back? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज फॉल बैक। ये भी मैं करूँगा आपस, बट नॉट राइट। ये भी कर चुका हूँ मैं। लाइटनिंग, आई थिंक ये मैंने, हाँ ये भी मैं कर, सारे हार्ड आ रहे थे मैं करता हूँ। fuck this। ऑल दो मेरे को याद नहीं है, and बस एक सवाल बचा इसमें तो। कंटिन्यूस अवेरेज कॉल्ड नाइस, where k odd numbers on it। नाइस अवेरेज। um then we have k odd number, total is are k odd numbers, right, and the number of surveys, so I will just keep on increasing my spend जब तक नहीं हो जाता। start will be 0, odds is equal to odds is equal to 0, then I can say for end and then range line of nums, if nums of n mod 2 is equal to 1, odds plus is equal to, and then I can say while while
So if I can simply say if odds equal to k, right? If this is the case, तो रिजल्ट भी है मेरा 0 plus equal to n minus start plus 1. Can I do something like this? No, I cannot. I cannot do this. Then I can say while odd is equal to k, right? I need the value of the first odd जो मेरे को मिला है, right? Number of subarrays वो है ये मेरे को बहुत ये अलग अगर ये बोलते लॉन्गेस्ट रो निकालो तब तो मैं बहुत आराम से कर लेता। तो जैसे टोटल नंबर आ जाता है मैं काइंड ऑफ खुश रहता हूँ। आई डोंट नो टोटल नंबर कैसे निकालता है, इसे करना पड़ेगा मुझे, देखना पड़ेगा। और इज इक्वल टू जैसे मेरे को के मिल गया, राइट? तो फर्स्ट टाइम मेरे को के मिला, अगर मैं स्टार्ट को आगे बढ़ाऊंगा तो आई एम गोना मिस if I somehow had मेरा आखिरी और क्या था, मतलब अभी तो जस्ट मैं आया हूँ तो मेरा आखिरी और तो यही है। तो 1121 मेरे को यहाँ पे पहला मिलेगा। अब इसके आगे जितने और होंगे वो भी तो अच्छा एग्जैक्टली केस है। अब मेरे को लास्ट और की पूछता हूँ, मेरा हो सकता था कि हो जाता वो प्लस ये, राइट? अगर मेरे को बताओ तो लास्ट और मेरे को किस पोजीशन पे मिला है, किस पोजीशन। ओके, so if I keep my last order at some -1 starting, right? और अगर ये odd हुआ आई वेट माई लास्ट,
last odd is equal to the position है founded at। अब इससे पहले मेरे को एक चीज़ करनी है। ओके, तो while odds are greater than magnitude, स्टार्टिंग में कितने थे और एंडिंग में कितने थे। एंडिंग में कितने थे, राइट। तो एंडिंग में कितने थे मेरे, रिजल्ट प्लस रिजल्ट टू, एंडिंग में थे एंड -1 माइनस लास्ट ऑड वाला। लास्ट ऑड मेरे को कहाँ मिला, राइट। दिस इज माई पोजिशन। while odds is equal to k, result plus is equal to 1। Right. Then I can say अब odds बढ़ गया, राइट। while odds greater than k, if nums of start mod 2 is equal to 1, odds minus equal to 1, right, and then start plus equal to 1, and I also have to update my answer, else result प्लस इक्वल टू 1 नहीं होगा ना, has to be प्लस इक्वल टू हमारे जितने वो है, जितना आगे चले गए लास्ट पोजिशन पे। मेरी जो करंट पोजिशन है, मेरी जो करंट पोजिशन है प्लस I-1 माइनस लास्ट पोजिशन +1, तो I-A कर लेते हैं, राइट। and then I can say start plus is equal to if nums of start is equal to mod 2 is equal to 1, return, not no return, but odds minus equal to 1, and then anyways start plus equal to 1, right. Then I say this is okay,
This is okay. Right? Then I say, very simply, I say, do one thing, do one thing. What? ऐसी ऐसा काम करो आप, अब ये खत्म होने के बाद मान लो odds इज इक्वल टू 3 था, it is equal to क्या? What am I gonna do? Result plus is equal to, हमारा I क्या है? Len of num minus 1 num minus last position. If nums of start mod 2 is equal to 1 minus 0 to 1 start and last mod यार 1 current 1 आ रहा है 0 1 2 5 minus 4 should give me 1 current ओके मतलब इसमें नहीं हो रहा। तो जब मेरा 1 तो मैं इधर आया मैं शायद मैंने क्या देखा दैट यप वाई लॉट्स ग्रेटर देन के हो चुका है। रिजल्ट प्लस रिजल्ट टू एंड क्या था मेरा? अच्छा तो मैं लास्ट नोड अपडेट कर दूंगा इंटरेस्ट में। ओके लास्ट नोड बाद अब मैं एक और अपडेट बता दूं कि अगर ये और था लास्ट नोड अपडेट I have no particular
थैंक यू, दैट इज व्हाट आई। अच्छा, ये तो सेम है। आई डू नॉट लाइक। ऐसी। वेल, आई इन दैट बैड। फक ऐसे। Often, often, I ain't running with that. Right? Sliding window even queue. Do you think I run with the sliding window queue? Face optimized. Yes, sir. Show it to me. Show it to me. Coverage initial gas. Research. तो अपना ओके odds बढ़ गया राइट। अगर ये के है what the fuck is this? अगर तुम्हारा के इक्वल आ गया। इनिशियल गैस मेरा जीरो था। बाई क्यू साइज ग्रेटर तो मैं इनिशियल साइज बढ़ाते जाता हूँ। ओके। ओके। और उसके बाद तो जितने भी एलिमेंट्स थे तो जितने भी स्टार्टिंग में एलिमेंट्स थे उतनी तुम्हारी कवरेज बनेगी। मैंने ऐड कर दिया। ऑनेस्टली दिस इज अ बेटर सोल्यूशन देन माइन। टेक्निकली हम सेम थिंग कर रहे हैं बट आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट जस्ट डू इट विद कि जब तो अब देखो कि क्या है। जब तक तुम्हारा के है राइट तब तक तुम काउंट कर लो कितने एलिमेंट्स था तब तो उतनी कवरेज है राइट। एनीवेज, एनीवेज आई एम हैप्पी और एक और नंबर बढ़ गया। चार। लाल कर दो। इट लुक वियर्ड। होल्ड अप होल्ड अप होल्ड अप। अच्छा कलर बताओ। मेरी ब्लू ना कुछ ज़्यादा वो। वाइट। वाइट तो डिफरेंट। लाइट ग्रीन। वाइट रहने दो। नॉट ज़्यादा बकचोदी भी दो। गुड थिंग। ये दोनों कर रहा हूँ मैं दैट्स ऑल। दैट्स ऑल होपफुली ज़्यादा मुश्किल नहीं। और पहले नाक अच्छे हो आज किडिंग। ये तो मैंने शायद बहुत कल ही परसों का मार्च कह रहा हूँ पहले का। ABC।
जब ये मैं कर भी लूँगी। ओके, एक और चीज़ ना कर रखा हो, इजी हो। Okay, there are several arranged in a row and each card has an associated number of points. The points are given in the border area. In one step, you can take one card from the beginning, from the end of the row. You have to take exactly 8 cards. Your score is the sum of the points you have taken. Given the integer array, whatever, return the assumed score. एक स्टेप में या तो स्टार्ट से लो एंड से लो मेरे को एग्जैक्टली क्या यू हैव मैक्सिमम स्कोर तो अगर मैं ग्रीडी लगाऊंगा तो 1 लो बट मैं ये 1 लेता हूँ फिर मैं 6 लेता हूँ फिर 5 I don't think so. It's sliding window. Okay? It looks nothing like sliding window, and I'm a dumb fuck. That's why. And I'm a dumb fuck. That is why. यहाँ से यहाँ तक हाँ so how can I do this? हाँ ये क्या है? English with 5 step. Okay. I don't know actually. And I cannot do this. मैं actually आज बहुत थक गया. I know आज की स्ट्रीम काफी थोड़ी से disappointing थी. And मैंने इससे जस्ट पिछले वाले दिन skip करा था. I know that. And I do not feel good about this. But I will have to take a break. मतलब नॉट अ लॉन्ग ब्रेक बट आज के लिए आई हैव टू फिनिश इट आज के लिए और मैंने लीड कोड पे टेक्निकली 5 सवाल नहीं करे 4 ही करे टोटल मैंने 5 सवाल ज़रूर करे आई मीन 20 से इंक्लूड करके एंड वो इंक्लूड करके जो मैंने पहले कर रखे थे वापस करे सो आई होप यू गाइस विल कंसिडर दैट एंड लेट मी गो फॉर टुडे थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में फॉर श्योर एंड आई गारंटी यू दैट अगली स्ट्रीम में
मैं ये नंबर 380 करूँगा. 38, that number is gonna be 380 for sure. So let us meet tomorrow. Take care. Bye.